खुलेगा किस्सों का पर्चा जब होगी चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा विद आरजे सौम्या ओनली ऑन रेडियो टिश्यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं सौम्या मिश्रा और इस वक्त जुड़ गए हैं एक और सेशन में ऑफ चाय पे चर्चा। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मैं अपने साथ लेकर आ रही हूँ टीवी की दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस को जिन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो ज्वाइन किया था। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिफोर द पेंडेमिक। बाय द वे विद्या, आई हैव टू से सी द कैरेक्टर स्टिल स्टक इन माय हेड के विद्या का जो आपका कैरेक्टर था इतना पसंद था मुझको कि मैं कहीं से भी टाइम निकाल के उस शो को देखती थी। The reason was because it was all about education and the struggle of a woman, right? Somebody who did not get the opportunity to go to a school. So इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं मीरा, जिन्होंने इसके पहले कई किरदारों को प्ले किया है। मेरा पर्सनल फेवरेट था विद्या, but because of pandemic it had to be ended and we really hope कि कुछ हो जाए मैजिक और एक स्पिन ऑफ सीरीज शुरू हो उसकी और नया सीजन आए, कुछ हो, and we get to see a little more of that. So welcome on board, Meera ji, and I'm so excited to be interviewing you. Thank you so much. The pleasure is also mine to be being interviewed by you, and thank you for. A lot of people praise me for other characters that I've played, but I think this is a genuinely pleasant compliment getting for you for Vidya. So thank you so much for it. तो मैंने देखिए आपके पुराने भी जो पुराना शो था आपका, जैसे मैं काफी फॉलो करती हूँ टीवी। आई एम लाइक, मेरे को बहुत पिटाई हुई है बचपन से मेरी उस चीज के लिए कि बेटा टीवी मत देखो, पढ़ लो, बट मैंने बहुत टीवी देखा है और अभी भी देखती हूँ। लाइक यहाँ आने के बावजूद भी आई फाइंड वेज। सो व्हेन हॉटस्टार एंड जी टीवी ऐप स्टार्टेड, इट वाज लाइक माय लाइफलाइन। मुझे तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस मेरी चल पड़ी है सही रास्ते पे। बट आई डिड मैनेज टू वॉच ऑल योर एपिसोड्स फॉर Vidya especially because the topic was very interesting, very rooted, and a issue like एक issue के अंदर multiple issues seated थे जो एक के बाद एक उसमें दिखाए जा रहे थे. So that is why it was a very good issue from that point of view. तो चलिए बढ़ते हैं और पहले आपसे पूछती हूँ मैं कि मीरा जी जो है वो टीवी इंडस्ट्री में पहुंची कैसे? I started 6 years back actually, and it was just like you, जैसा कि आपने बताया कि पिटाई हुई है आपकी कि टीवी मत देखो इतना. I was a TV geek, but I was a good student also. I was a science student pursuing engineering, and जब 12th मेरा finish हुआ तो you know during my boards also I used to, उस वक्त ये है मोहब्बतें आता था जिसका रिपीट रात को 11 बजे या ऐसे कुछ आता था, and I used to sneak into the living room, switch on the TV, volume एकदम कम पे रख के I used to watch the episode and then go back to my studying. So it used to be like that. So when my results came in and everything, I've been lucky. My parents have always told me that do what makes your heart happy. So it is that, you know, if at all I became an engineer, would I be happy becoming an engineer? Would I be happy doing the job जो रोज की होती है आप corporate office में जाके कर रहे हो? Was that my type? That was questioned to me after my results came in, and I got pretty good results. मतलब सबको लगा था कि अच्छा अब तो ये कॉलेज ही जाएगी, ये तो टॉपर है, ये तो कर ही लेगी. And then very randomly I asked my mother that what do you think? Am I pretty? Can I be an actress? So she's like, all mothers think their daughters are pretty and like that. So I was like, that's not an answer. Then I told them that I want to act. So my father said that we don't have a background there. You need to do your research and how you want to go, how you're going to make your way. So he found out an acting class, and within a week I was in Mumbai. And so then everything started, and I started going to the acting class, and meanwhile I was giving auditions also, and right after my acting class I got a cameo, and then I got my first proper show called Dilli Wali Thakur Girls. And so I've been very lucky in that way that God has always guided me and has been kind to me by giving me opportunities since the time I've come to Mumbai, but I have made serious efforts towards it. So that's how I became an actor. So I see that in your acting too. मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जैसे हिंदी तो आप बहुत फ्लुएंट बोल रही हैं, इसके अलावा आप कोई और भाषा भी बोलती हैं, रीजनल भाषा? I am a Gujarati basically. My mother is a Gujarati.
So my Gujarati is very nice. My father is a Maharashtrian, so I am fluent with Marathi also. And यहाँ पे when you're driving cars and stuff, मतलब it's funny, but आपको अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है, आपने सिग्नल अगर गलती से क्रॉस कर लिया तो बोलना पड़ता ना जाओ दिया ना. तो उतना बेसिक मराठी भी आता है मुझे. So yeah. बस उतना मुझे भी आता है. रूमसी के लिए Yeah, so Gujarati little bit. हाँ जी. So little bit Marathi. Yeah, little bit Marathi, Gujarati, Hindi, English. So अच्छा, yeah, the reason I asked you is, so as you know, I'm a radio person, so मैं लोग जब कोई टीवी शो पे एक्टर्स बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो मेरा उनके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है. ठीक है. So when I was watching your shows, आपके जो पुराने shows थे, they were not very synonymous to the languages that you were just talking about, right? Yeah. बहुत ही different languages थी. But मुझे कहीं पे भी आपके बोलने में accent नहीं सुनाई देती थी. Like I could not tell that you are not like ethnic to this region जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे होते थे, right? और शुद्ध हिंदी वाले कैरेक्टर्स थे आपके, बाय द वे, बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी वाले, जिसमें एकदम जो गांव की हिंदी होती है वैसी टाइप की हिंदी थी आपकी. So how did you adapt yourself? Did you go through a linguistic training or something for that? So in the period of the 4 months acting class that I had gone to, we used to have a class called I'm sorry, forgetting the name of the class. एकदम से दिमाग से निकल गया. But it used to be a diction class. So it was called diction class. तो उसमें जो basic जो जैसे वो my name is Khan from the epiglottis, वो वहाँ पे हमें सिखाया जाता था for sure. But when I was doing Udaan also, and when I was playing Vidya also, I made a very conscious effort, and I have this thing in my head. I can't say things wrong if I'm not confident about it. So I'll go on Google and I'll check, and I'll listen to how it's pronounced, and then I'll say it, or I'll ask somebody who knows it and what it is, because ऐसे बहुत सारे words होते हैं जो पहली बार सुने होते हैं. मतलब हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे भी शब्द हैं. तो ये सारी चीजें थी. Luckily directors होते हैं गाइड करने के लिए, या somebody who's well versed in that language, they'll help you out. But it's important that what you're saying has to come out right. And being a गुज्जूज में generally श और स का बहुत problem होता है. मतलब खुशी की जगह दे से मुझे बहुत खुशी हुई. So that's something that मेरे को मतलब कान में तकलीफ होती है सुन के. So yeah. So you did make an effort. So यहाँ पे मेरी तरफ से आपको एक सल्यूट है कि your efforts did pay off. पता है, मैंने जब पहली बार आपका विद्या का कैरेक्टर देखा था तो मुझे लगा क्या मेरी नॉलेज कुछ गलत है? Is she from UP? And I went back on Google to just check कि क्या मेरी like knowledge कुछ गलत है, या missing something, या forgetting something. And I was like, no, I'm not. And you really did a good job there. Like really good job there. So basically, people from UP, they speak a language called Awadhi. So when I started with Udaan, तो वो एकदम मैं अवधी में बोलती थी, and then they realized that our heroine is not looking nice speaking in a regional language, so they asked me to shift to Hindi. But the dialect and वो जो लहजा होता है जो आप पकड़ लेते हो एक पॉइंट के बाद में, वो रह गया. तो वो हम करके बोलना और जिस तरह से बात करते हैं वो सब मैनरिज्म हमने वैसे के वैसे ही रखे. So वो एक एफर्ट था जो कॉन्शियसली सबने मिलके डाला था towards the character. So this that you're saying is very true because I'm from UP. So इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो way of speaking था वो इतना अच्छा था कि मैं नहीं बता पाई कि आप यूपी से हैं कि नहीं है. And मैं I'm from very rooted, मेरा गाँव है, वहाँ जाके मैं 3-3 4-4 महीने रहती हूँ, तो मेरी ताई जी लोग बिल्कुल प्रॉपर अवधी में बात करती हैं. So that is why I could not tell. So you did a very good job there. Thank you so much. Thank you. So चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने कई variety of characters किए, right? How close are the characters to your personality when you become them? और कभी the first ever character that I So कभी this is a question always stuck in my head. So कभी shift, जैसे Bollywood actors क्या होता है, they play the character for 3 months or 2 months, right? Or 15 days or whatever. पर आप लोगों का क्या होता है, you play the character for years. And 1 day 2 घंटे 4 घंटे नहीं होता, आपका 16 घंटे की शिफ्ट होती है, कई बार उससे भी ज्यादा लंबे की शिफ्ट होती है, where you are that character, right? तो कभी वो शिफ्ट होता है कि आप धीमे धीमे अपने आप को उसमें बदलता हुआ देख रहे होते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत.
okay, I'll start with the first part of your question. My first ever character that I played was a cameo, and I was playing a goon. मतलब जो पैसे hate रही थी, तो I can't relate myself to that. Then I played Ishu in Dilli Wali Thakur Girls, who was a tomboy and a sports girl. I come from a background where I've played a lot of sports, and so you know I relate myself to that. Also, घर में I am not very girly. मतलब मेरा फिर I'm like a भाई. ऐसे घर में मैं ऐसी होती हूँ कई बार. तो वो थोड़ी बहुत चीजें relate हो जाती है. When you playing a character, आपको लगती है कि ये तो मैं भी हूँ. So that also happens. For Udaan, I'll say Chakor was a very strong character. A girl. whom I मतलब ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी आज तक जो you know who's so determined and focused and yet giving and caring and all of those things. And I as a person I'm a very emotional person. मैं बहुत रोतलू थी पहले. I used to cry at small things. So playing that character, I started changing a bit in terms of being the emotional part. And somehow you know when you're playing a certain character, there are few things or few mannerisms of a character which are you know जो आपको लगता है कि it helps you grow as a person. Yes. As in for Chakor, she always used to think about everyone, and after a point, you know, on the sets also, my thought process would be that we all are a family, and you know, as Meera also, I used to think like that, and it was all about winning together or you know going through things together, and it was all about that. So I think that those are few things I picked up from Chakor. And from Vidya, I think I personally am a very simple person, and मतलब ये खुद को नहीं बोलना चाहिए बट मेरी माँ भी बोलती है मैं बहुत भोली हूँ कुछ चीजों में. तो वो भोलापन मुझे विद्या में डालने में काफी इजी पड़ा बिकॉज यू नो वो एफर्ट नहीं डालना पड़ा कि अच्छा अब मैं भोले बनने की एक्टिंग करती हूँ, बिकॉज इट कम्स आउट नेचुरली विद मी. आई कैन लुक और एक्ट डम इफ आई वांट टू. इफ आई मतलब तो ये एक वो चीज थी. बट फॉर विद्या आई हैड टू. But you know, for Vidya, the most difficult thing was that I am a well-read person, and my education is really strong. I'm educated from a convent school. तो वो character जिसको कुछ ही नहीं पता था, वो play करना थोड़ा सा difficult हो गया मेरे लिए because you know you have to unlearn a lot of things when you're playing a certain character. तो उसमें मैं थोड़ी सी उससे अलग थी. But I think I'm picking up something from each character that I'm playing. That's good. See, यही मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इतने लंबे वक्त तक आप वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, certainly कुछ ना कुछ पिकअप जरूर करते होंगे, because you only get to see the strong parts of the character, right? You also get to see good things जो आपके अंदर नहीं pre-exist करती, right? So maybe you get conditioned to become that. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो राउंड है वो क्विक वाला राउंड है. इसमें मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. आपके पास आप सोच नहीं सकती, ठीक है? जो आपके दिमाग में आएगा वो आपको बोलना है. Okay. So let's move forward, and the first question is one incident that changed your life. Signing Udaan. A TV show other than that you have already done that you want to be a part of or would want to be a part of. इस प्यार को क्या नाम दूं? That was on Star Plus. मेरा भी बहुत पसंदीदा शो है वो. I love that show. I have still watched it many times. I also do that. So one confession for our viewers. One confession that I can be really lazy at times, and मैं पूरा दिन couch से हिलती नहीं हूँ अगर मतलब मुझे हिलने की जरूरत नहीं है. But I can be a sloth. Nice. I like that. Now, your favorite sport? आपने बोला बहुत सारे sports खेलते हैं. Which one is your favorite? Basketball. Your favorite food dish? My favorite, I have lots of favorite. I'll start naming all of them. It's pani puri, momos, biryani, Chinese, and anything that's chocolate. हाय इतनी सारी इंडियन डिशेस का नाम ले लिया, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी ये चीजें. Okay, your go-to person to vent out when you're frustrated? It's my best friend Sanjana Udaan who stays in Canada. So, but then I मतलब go to रात में होता है because उसकी सुबह होती है उस वक्त वहाँ पर.
तो उस तरह से हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है, बट इट्स हर। या ओ हाय संजना, तो हम भी कनाडा में ही बैठे हैं, हमारी तरफ से संजना को हाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पर्सन नाइस पर्सन। चलिए, वन थिंग दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट। चॉकलेट। नाइस। व्हाट गिव्स यू द पीस, लाइक कौन सी ऐसा चीज है जो आपको करने के बाद एकदम शांति मिलती है? बुक्स पढ़ना। ओह, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है Yeah. लाइक वी आर काइंड ऑफ द सेम, हम सेम ही सांचे में ढले हुए लोग हैं। तो नाउ योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? That's cool. It would be Greece. I want to go to Greece. Yeah, me too. Thanks to pandemic, we can't go anywhere. अब नहीं जा सकते। हाँ। I know. One thing that you don't leave your home without. My phone. वैसे मुझे पता था यही जवाब होगा ज्यादातर लोगों का, बट मेरे लिए है चाबी, घर की चाबी। I want to come back home. हमारी एक्चुअली घर की चाबी हमने पड़ोसियों में दे रखी है, तो that's not an issue for us. That's good. That's good. So, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मीरा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना कुछ यंगर वर्जन से बातचीत कर रही हूँ। जैसे आपने शुरू में बताया कि आपको टीवी देखने का बहुत शौक है। तो चलिए यहाँ पे आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। वो सवाल ये है कि बचपन में जब आप टीवी शो देखती थी छुप छुप के मेरी तरह रात में निकल के मम्मी पापा के सोने के बाद, तो आपका फेवरेट शो कौन सा हुआ करता था? यार बहुत सारे थे। एक तो था सारा आकाश, जो जिसमें जो मोनिका शर्मा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं सरनेम गलत ले रही हूँ, बट जो कैरेक्टर था मोनिका, वो सही डे उधर प्ले कर रही थी, जो मेरी माँ बनी थी उड़ान में। तो मैं सारा दिन उनको फिर यही करती थी, आप मेरी वो आइडल हो, और ये सब मैंने उनको बहुत तंग किया ये सब करके। वो एक शो था जो मेरे पेरेंट्स दिखाते थे हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना जगाने के लिए। एंड एक शो था जो मुझे मना था देखने के लिए और मैं उसके बावजूद छुप के देखती थी, वो था दिल मिल गए। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड उस टाइम पे, एंड वो लाइक प्रॉपर रोमांटिक शो था। तो मेरी मम्मी को लगता था कि ये देखेगी तो पता नहीं दिमाग में क्या ही चलने लगेगा। हाँ। उसके बाद आया मिले जब हम तुम, तब तक आई केम इनटू 9th और समथिंग, तो मेरी माँ भी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई कि अच्छा चलो देखने दो। सो दैट, और उसके बाद कौन से रोकने पे रुकी जाएगी छुप छुप के देखेगी। बट वो उन्हें नहीं पता ना कि मैंने सब देखा हुआ है। तो वो एक था। और हाँ बस, एंड देन आई यूज्ड टू वॉच ये है मोहब्बतें, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय वॉचिंग रमन एंड निशिता's केमिस्ट्री, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और इस प्यार को क्या नाम दूं, वो इतने शोज है जो मैंने मतलब दिल से देखे हैं। मैं अब आपको बताती हूँ, आपको इससे मेरी उम्र का पता चल जाएगा। मैं जो छुप छुप के शो देखा करती थी क्लास 9th में, वो था कुटुंब। तो इसका मतलब बहुत छोटे हो गए जब कुटुंब आया होगा। आई थिंक मे बी फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे, या मे बी इवन स्मॉलर देन दैट। कुटुंब देखी। एंड उसके साथ आया था कसौटी जिंदगी की 1, जो मैं देखती थी। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ कमोलिका, और मम्मी से भीख मांग के मैं अपने बाल वैसे ही कटाती रहती थी। माई मॉम इज एक्चुअली शी यूज्ड टू रन अ सैलून बैक इन लखनऊ। सो मुझे सैलून में जाके बस यही काम था, मम्मी मेरे बाल काट दो, अभी ये स्टाइल हो गया है मुझे भी यही स्टाइल चाहिए। सो इट्स रियली फन टॉकिंग टू यू। जाते जाते हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, प्लस हम आगे क्या देख सकते हैं? कुछ अपकमिंग सरप्राइज है क्या हमारे लिए? अभी सब बातें हो रही हैं, तो अभी नथिंग इज फिक्स्ड एंड फाइनल। जब होगा तो अपने आप लोगों को पता चल ही जाता है, एंड एवरीबॉडी इज लाइक ये। सो आई विल लेट यू गाइज नो, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई होप दैट यू गाइज आर ऑल सेफ ओवर देयर। माय ब्रदर आल्सो स्टेज देयर, ही स्टेज इन ओंटारियो। तो वो बताता है वहां पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिए वहां पर। यहाँ पे things are much better actually. We are very proud Canadian, क्योंकि यहाँ पे people are being very cautious. The government was very strict, and now everybody is taking. But still, मतलब इंडिया जैसा हाल नहीं है वहाँ पर, इसलिए I'm saying कि मतलब वहाँ पे इतने rules और strict नहीं करना पड़ रहा, because I think people understand the meaning of social distancing. Yes, also we don't have that many people, so the credit goes to the less population as well, right? India का situation. Yeah, true. तो अपने भाई के लिए कोई मैसेज दे दीजिए, क्या पता आपका भाई देख ले इसे। वो अभी फोन करेगा। It's his time, no? I think it's your time right now. मतलब आपका दिन
चल रहा है तो वो बिल्कुल। करता है इस टाइम पे कॉल, उसका हो जाता है. So वाह, yeah, thank you. Take care, you guys, and hope to talk to you again. Thank you for having me. थैंक यू.